Assalamu alaikum, this is Maqsood Ali, an English language teacher. I welcome you to my YouTube channel English with Maqsood. Today I have brought the word happy and 5 synonyms of it with usage and meanings. So let's begin the lecture. Number 1. Elated. Elated means happy. I am very elated at your achievement. मैं आपकी कामयाबी पे बहुत खुश हूँ. She was elated at the result of her child. वो अपने बच्चे के रिजल्ट पे बहुत खुश थी. I got elated when I heard of your getting job. जब मुझे आपकी नौकरी मिलने का पता चला तो मैं बहुत खुश हुआ. Number 2. Glad. Glad also means happy. खुश. He was so glad. वो बहुत खुश था. I am glad to have you in my party. मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरी पार्टी में आए. She is glad about her husband's promotion. वो अपने हस्बैंड के प्रमोशन पर बहुत खुश है. Cheerful. Cheerful also means happy. The kid is in cheerful mood. बच्चा बहुत खुशगवार मूड में है. You don't seem cheerful today. आज आप खुश नहीं लग रहे. इसका मतलब आज आप उदास हैं. You always have a cheerful smile. आपके चेहरे पर हमेशा खुशगवार मुस्कुराहट रहती है. Number 4. Content. Content means happy with what you have. आपके पास जो कुछ है उसके साथ खुश रहना. He is content. वो खुश है, मुतमईन है. They are content with what they have. वो उससे खुश हैं जो उनके पास है. You seem more content today. ये मैंने 2 सब्जेक्ट लगा दिए. टाइपिंग में मुझसे गलती हो गई है तो आई को माइनस कर दें, काट दें. आप अपने रजिस्टर में लिखें तो आई को काट दें और सेंटेंस बनाए. You seem more content today. You seem more content today. आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, मुतमईन लग रहे हैं. Number 5. Jolly. Jolly also means happy. Jolly is uncommon word. So, I recommend that you replace the word happy with these words. ठीक है. Happy जो एक common word है, इसको अगर आप इन synonyms के साथ replace कर देंगे तो आपकी language advanced level की लगेगी और जिससे आप बात करेंगे या जिसको लिखेंगे तो वो impress हो जाएगा आपकी language से, आपकी vocabulary. He was jolly when I met him. I like my child's jolly face. मैं अपने बच्चे का मुस्कुराता हुआ चेहरा पसंद करता हूँ. All the family members sound jolly today. सारे फैमिली मेंबर्स आज खुश लग रहे हैं. Sound means look और seem. ठीक है, ये verb है यहाँ पे. Sound ये म्यूजिक वाला sound नहीं. I hope you understood the words and I also hope that you enjoyed the lecture. If you like the lecture, like my video, subscribe to my channel for more videos and press the bell icon so that you get notified when I upload a new lecture. So see you in next lecture. Till then, bye bye. Allah Hafiz.